Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, initiating with the most merciful and greatest name of Almighty Allah, who is Master and King of Kings. Dear students, I welcome you all in our lecture number 10 of English grammar. I hope all of you are fine and enjoying still your online lectures. Dear students, it is your English grammar lecture number 10. I told you in your previous lecture that we will learn more about pronoun and also about subtypes of pronoun in our upcoming lecture. So here it is. Now we are going to read about subtypes of pronoun. First of all, the first kind that we have to read in pronoun is demonstrative pronoun. Have you ever heard the word demo? That a teacher has come for demo. So demo is taken from the word demonstration, and from demonstrative word is made. Okay, the word demo is taken from demonstration or is short form of demonstration. Demonstration means point out, point to something. डेमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इशारा, झलक या किसी चीज़ की तरफ इशारे को हम डेमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं. सो demonstrative pronouns are basically used to point out things or people. It means that this type of pronouns are basically used to point out things or people. If we want to point out anything, we must use demonstrative pronouns. The definition of this subtype of pronoun is so easy to be understood that these pronouns are basically used to point out things or people, and they are four in quantity. They are four in quantity and are this, that, these, those. Okay, are you watching on your screen? They are this, that, these, those. You cannot read it this, that. It is not that, it is that. Okay, what is it? That, these, those. Those, not those. Okay, so now I have made some sentences for your easiness. Then I will give you a homework to make out sentences using demonstrative pronouns. मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, सेंटेंसेस में यूज़ किया है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को. आप इन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल आराम से एहतियात से देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंस. ओके, आप हर एक जुमले की मीनिंग समझने की कोशिश करें. देन ट्राई टू सबमिट योर होमवर्क. फिर आप अपना होमवर्क शेयर और सबमिट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ दिस. दिस इज़ यूज्ड फॉर singular thing and near thing. Okay, if it is a pen, can you see this pen? Can you? Okay, if I say that this is my pen, what is that? This is my pen. How many pens do I have here? I have just only one thing, because this defines singular thing and also it is near. Can you see? Is the pen so far from me or so near to me? क्या आप ये पेन देख सकते हैं? और ये पेन मेरे क्या बहुत करीब है या बहुत दूर है? और तादाद में, क्वांटिटी में इट इज़ ओनली जस्ट सिंगुलर. ये सिंगुलर है, तो मैं क्या कहूँगा कि दिस इज़ माई पेन. अब मैंने दिस तो यूज़ कर लिया, सिंगुलर भी है, नियर भी है, पर द सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट और द सेंस इज़ इनकम्प्लीट. यहाँ हमारा सेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है, बिकॉज आवर प्रोनाउन demonstrative tells us that demonstrative pronouns are used to point out things, कि जो चीज़ों की तरफ इशारा करें. अब मैंने यहाँ कहा दिस इज़ माई पेन. क्या कहा मैंने? दिस इज़ माई पेन. पर मैं यूँ नहीं कहूँगा, मेरे हाथ देखें पॉइंट नहीं कर रहे इस चीज़ को, इशारा नहीं कर रहे. सो मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, तो ये ठीक तो है, पर हमारे प्रोनाउन के हिसाब से मैं यूँ कहूँगा दिस इज़ माई पेन.
मैं ये इशारा कर रहा हूँ, कैन यू सी माई फिंगर अक्रॉस द पेन, क्या आप यहाँ मेरी फिंगर देख सकते हैं? गुड, तो मैं कहूँगा दिस इज़ माई पेन, दिस इज़, ओके। मैं क्या कहूँगा? दिस इज़ नॉट, दिस इज़ माई पेन। इशारा करूँगा मैं उस चीज़ की तरफ, क्योंकि हमारा प्रोनाउन यही बताता है कि प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव वो है जो चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए काम आए। एक तो पेन ये सिंगुलर है, एंड इट इज़ सो क्लोज टू मी दैट आई विल यूज़ दिस। मैं इसके लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत करीब है मेरे और सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा? दिस। गुड। नाउ नंबर 2, दैट। दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगुलर थिंग बट दैट इज़ फार इनफ अवे, जो थोड़ा सा दूर हो। दिस भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दैट भी सिंगुलर के लिए। दिस यूज़ होता है जो चीज़ सिंगुलर हो पर नियर हो। दैट यूज़ होता है सिंगुलर के लिए पर जो चीज़ थोड़ा दूर हो। अगर बहुत करीब है, इफ़ यू कैन टच द थिंग यू मस्ट यूज़ दिस विद इट। अगर कोई चीज़ बहुत करीब है और सिंगुलर है, आप दिस यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ तादाद में सिंगुलर है एंड फार अवे है, थोड़ी दूर है, आप दैट इस्तेमाल करेंगे। तो आप यूँ इशारा करेंगे दैट इज़, अगर दूर है तो आप यूँ इशारा करेंगे दैट इज़। ओके, समझ आ रही है आपको बात? गुड। नाउ यू विल यूज़ दिस विथ सिंगुलर एंड नियर थिंग, and that with singular plus far. That is Ahmed's car. What? That is Ahmed's car. It means the car is not so close to me, the car is far away from me. That's why I will use that. Okay. And number 3, it is these. These is plural of this. What is it? This का जमा these है. These is plural of this, so it will be used for plural things and things that are close, near. जो चीज़ें तादाद में प्लूरल होंगी पर नियर होंगी, उनके लिए हम these यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम स्टैंडिंग इन द गार्डन एंड आई एम पॉइंटिंग आउट माई ट्रीज़। अगर मैं एक बाग में खड़ा हूँ और वहाँ से मैं कुछ पेड़ों को इशारा कर रहा हूँ, यानी बता रहा हूँ, सो आई विल से दैट दीज आर माई ट्रीज़। मैं कहूँगा ये मेरे पेड़ हैं। दीज आर माई ट्रीज़ बिकॉज द थिंग्स और ट्रीज़ आर सो क्लोज टू मी दैट आई कैन टच और आर टू क्लोज टू मी। बट अगर थोड़ा सा दूर होंगे तो हम कहेंगे दोज आर माई ट्रीज़। अगर दूर हैं तो साथ खड़े हैं इशारा करेंगे तो दीज कहेंगे। एंड नंबर 4, दोज इज़ प्लूरल ऑफ दैट। दोज जमा है दैट का। ओके, दोज इस्तेमाल होता है प्लूरल थिंग के लिए और जो फार हों, फार अवे थोड़ा दूर हों। जैसे मैंने आपको बताया, दिस यूज़ होता है जो चीज़ सिंगुलर हो, करीब हो, सिंगुलर भी हो, करीब भी हो। दैट यूज़ होता है सिंगुलर चीज़ के लिए, सिंगुलर यानी हो, और फार यानी दूर हो। दिस का जमा है, प्लूरल है, तो दीज एक तो प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ होगा और दूसरा करीब की चीज़ों के लिए, नियर थिंग्स होंगी जो। और दोज, दैट का जमा है दोज, और दोज यूज़ होगा प्लूरल थिंग्स के लिए और जो फार यानी दूर होंगी उनके लिए। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर getting my point. Dear students, if you do not understand anything from the lecture or you have any hesitation in the lecture, you can ask me personally on WhatsApp group or you can share your questions on WhatsApp group. I will explain it for you. Okay, so don't be hesitated, try to question me. मुझसे सवाल करने की कोशिश करें। आई विल गिव यू द रिप्लाई ऑफ ईच योर क्वेश्चन। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एंड हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जनरली टेक्स वर्ब आफ्टर इट। कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अपने बाद वर्ब लेते हैं। यानी फॉर डिटेल्स रीड द अबव सेंटेंसेस। नोट है कि डिटेल के लिए आप ये सेंटेंसेस रीड करें। जैसे कि दैट इज़, अब इज़ क्या है? इज़ हेल्पिंग वर्ब। इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज़ आर एंड आर। आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्ब इज़ यूज्ड। जैसे यहाँ पे नोट में भी कहा गया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जनरली टेक्स
demonstrative pronouns generally take verb after it कि demonstrative pronoun अपने बाद यानी this that these और those के बाद हमेशा verb लगेगा, ठीक है। is am are ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ओके। और ये नोट मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो यही दिस दैट दीज और दोज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, ओके। यहाँ हमने प्रोनाउन पढ़ा है, आगे हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे ये। तो इसके लिए ये नोट बहुत ज़रूरी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जनरली टेक्स वर्ब आफ्टर इट. For details, read above sentences. Dear students, now you have to make out 8 sentences from these words. Use this, that, these and those in your sentences, and you have to make 8 sentences of this exercise, okay. Dear students, allow me to end your lecture here. We will meet inshallah upcoming lecture. Allah Hafiz.